Hello students, so let's start one another case study. So this is based on the topic of the pollination, especially the autogamy topic has been discussed from the kind of pollination, and this is given at your page number 27, 28 in your NCRT. So just a reminder to you people to keep your NCRTs and your notebooks with you. Let's start with this case study. So pollination is the act of transferring the pollen grains from male anther of a flower to the female stigma. We know that during the pollination, the pollen grains are transferred from the male to the female flower. This is called as the male part to the female part of the flower. This is called as the pollination. The goal of every living organism including plant is to create offsprings for the next generation. Yes, this is very important. This is required for the continuity of the species, otherwise the species will not be able to survive, so that every organism is having the tendency to produce their next generation. One of the way that plants can produce offspring is by making seeds which then germinate to produce new plants. So if we talk about plants, their mode of producing the new one is production of seeds, and then these seeds will germinate to produce the new plants. Two types of flowers with their pollination seen in plants are chasmogamous and clistogamy. Chasmogamy and clistogamy. So in this case, the clistogamous flowers are those which do not open, they always remain closed, whereas the chasmogamous are those which are open flower. Normally the flower which are present in our surroundings, majority are the chasmogamous, but some are clisto. In that case, the flower do not open, so it means such flowers they always shows the self pollination, whereas the chasmogamous it is having probability of both self as well as the cross pollination. So chasmogamous flowers have strikingly colored petals and nectars guides the nectaries, in contrast to the clistogamous flowers which are minute and bud-like. So this is right, because the chasmogamous they have to perform the cross pollination, so in that case they are brightly colored, they secrete nectar or the nectaries so as to attract the pollinators, whereas the clistogamous, as they do not need to attract any sort of pollinators, so they always remain inconspicuous, unnoticeable, and are minute, small, bud-like. So let's come to the question answers. The first question is, clistogamous flowers are strictly autogamous because they remain. Why they are autogamous? Because they always, as I told you now, they always remain close. So here option B is the answer, always close. In chasmogamy, pollination takes place in. So in chasmogamy में क्या है? Pollination takes place in. कहाँ पर होगी? Open flower, closed flower, large flower, जिटोनोगेमी flower. So here open flower के अंदर होगी, है ना, तभी when the flower is open then only the cross pollination will be possible. Now the third question is, advantage of clistogamy is. अब clistogamy की advantage क्या है? Higher genetic variability, more vigorous offsprings. Next option is नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स एंड विबिपेरी. सो अगर मैं इन चारों ऑप्शंस की बात करूं, हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं, क्योंकि क्लिस्टोगैमस में जब सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है तो वेरिएशंस कम होंगी. मोर विग्रस ऑफस्प्रिंग्स बिल्कुल नहीं, जब हम सेल्फ पॉलिनेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन करते हैं तो उनके जो पोटेंशियल है, जो विगर है, वो कम होता जाता है. नेक्स्ट ऑप्शन है नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स. ये बिल्कुल सही है, बिकॉज जब वो क्लिस्टोगैमस है दे डू नॉट रिक्वायर पॉलिनेटर्स बिकॉज दे आर शोइंग सेल्फ पॉलिनेशन ओनली, एंड विबिपेरी इज ऑल्सो रॉन्ग. सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन. अगर पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है फिर भी सीड किस में बनती है? तो इसका आंसर हमारा आएगा कॉमेलाइना. ये हमारी एनसीईआरटी में मैंशनड है. दिस इज़ मैंशनड ऑन योर पेज नंबर 28 के ऊपर बड़ा क्लियर कट इस पिक्चर में भी इसको दिया गया है, एंड इट इज़ मैंशनड ओवर देयर. और अगर हम ये देखें तो ये कॉमेलाइना की पिक्चर है. आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ द टाइप ऑफ फ्लावर्स गिवन बिलो. अब हमने इसके फीचर्स आइडेंटिफाई करने हैं, जिसमें हमने अभी कहा कि इसमें क्लिस्टोगैमस और जो है चैस्मोगैमस दोनों तरह के फ्लावर्स जो हैं वो प्रेजेंट है. तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आती है, चूज़ द करेक्ट कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम दिस फिगर. पहले ही ऑप्शन है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन पॉलिनेटर्स. बिल्कुल सही, क्योंकि जो क्लिस्टो है दे ऑलवेज रिमेन क्लोज्ड, दे डू नॉट रिक्वायर
पॉलिनेटर्स, बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारी ये वाली। सेकेंड ऑप्शन है चेस्मोग्लैमस फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, ज़रूरी नहीं। चेस्मोगैमस फ्लावर्स मीन्स ओपन फ्लावर्स जो हैं वो हमारे यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, सो दिस इज़ रॉन्ग। द चेस्मोगैमस फ्लावर्स डू नॉट शो क्रॉस पॉलिनेशन, ये भी गलत है क्योंकि वो क्रॉस और सेल्फ दोनों शो कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है हमारी। तो अगर हम तीनों ऑप्शंस में देखें तो हमारी ऑप्शन 1 जो है वो राइट आंसर है। तो हमारे पास यहाँ है ऑप्शन डी, ओनली 1, दिस इज़ द राइट आंसर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस केस स्टडी। थैंक यू।